Society. Ladies and gentlemen, representing the Toyota family, I request the Managing Director and CEO of Toyota, Shri Masakazu Yoshimuraji, to kindly welcome the chief guests and the esteemed guests of honor and felicitate them. In line with Toyota's continued focus on sustainability, we intend to honor our distinguished guests by presenting them potted plants, symbolizing our dedication to a greener future. We have with us today Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. Please put your hands together as we present a potted plant to Honorable Union Minister of Heavy Industries, Dr. Mahendra Nath Pandey ji. Please put your hands together as our Managing Director and CEO felicitates Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri ji. Thank you, sir. Thank you, Shri Yoshimura ji. We are extremely honored to have amongst us the Honorable Ambassadors and Diplomats from Japan and Brazil Embassy, Honorable Members of Parliament, Senior Government Officials and Advisors, Senior Officials from India's major oil and marketing companies, President and Senior Officials from ISMA, Directors from Sugar Industries, Officials from Praj Industries, Officials from Siam and ECMA, various prestigious academic and research institutes, as well as our friends from the media fraternity. Thank you all for taking out time from your busy schedules and gracing this occasion. I now extend my invitation to Mr. Vikram Gulati, the country head and executive vice president of TKM, to deliver the welcome address for this esteemed gathering. Honorable Union Minister, Ministry of Road Transport and Highways, Shri Gadkari ji, Honorable Union Minister, Ministry of Heavy Industries, Public Enterprises, Dr. Mahendra Nath Pandey ji, Honorable Union Minister, MOPNG and Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Puri ji, Mr. Yoshimura, MD San and CEO of TKM, Mrs. Kirloskar, Chairperson and MD, Kirloskar Systems, His Excellency, the ambassadors from Japan and Brazil, distinguished guests, friends from the media, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you everyone. On behalf of Toyota Kirloskar Motors, it is my honor and privilege to welcome you all today here on this momentous occasion of unveiling of the prototype of world's first BS6 Stage 2 electrified flex fuel vehicle. India is seeing world's biggest rise in energy demand. We face severe challenges of energy security as well as adverse impacts from climate change. Accordingly, our Honorable Prime Minister has set a very clear vision for the country to achieve Atmanirbharta in energy by 2047 and carbon neutrality by 2070. Given that the transport sector is one of the largest consumers of fossil fuels, we have to shift towards sustainable mobility at a rapid pace and scale. We believe that this can be achieved by adopting full range of cleaner energy pathways and cutting-edge pace and scale. We believe that this can be achieved by adopting full range of cleaner energy pathways and cutting-edge technologies. Amongst these, ethanol, which is an indigenous, renewable and environmentally friendly energy source,
emerges as one of the best options for a true self-reliance and disruption-free energy transition. Higher ethanol use by vehicles presents huge potential to reduce fossil fuel dependency, lower import bill, enhance farmer incomes, and mitigate carbon emissions. Thanks to the government's huge efforts, India, in a very short span, has surpassed 11% of ethanol blending and will be achieving E20 by 2025. We have significantly higher ethanol available than what is needed for the E20 program, thus providing us with huge possibilities. Flex fuel vehicles, these technologies allow us to use higher mix of ethanol blends in gasoline, will be required to realize this huge potential that exists. One such technology is the electrified flex fuel vehicle that combines the use of flex fuel engines with the electric powertrain to provide benefits of greater petrol substitution by ethanol, as well as improved fuel efficiency due to the much higher electric mode driving that this technology presents. This also gives the lowest carbon footprint there is for any technology on a well-to-wheel basis. This technology uses minimal batteries and therefore safeguards us against negative impact of high imports of cell and their materials, as well as possible geopolitical supply chain risks. Our adoption of electrified flex fuel vehicles will help us to shift our internal combustion engine manufacturing ecosystem to that of flex fuel engines, as well as enable the creation of a new manufacturing base for electric powertrain parts, thereby ensuring a disruption-free transition for the country and the industry. As pioneers in vehicle electrification, Toyota believes that carbon is a real enemy, and we have adopted technology-neutral approach to rapidly realize carbon neutrality. Today is a very special occasion. We are fortunate to have with us the Honorable Union Ministers who have led from the front India's rapid transition towards green mobility. They are present here today to honor us by unveiling the prototype of the world's first BS6 Stage 2 electrified flex fuel vehicle. This prototype vehicle is based on the most admired Innova Hi-Cross and is designed to meet India's higher emission norms, thereby making it the world's first. This milestone reaffirms and demonstrates our commitment to provide wider choice of advanced green mobility solutions in line with the country's priorities. Once again, I would like to offer my special thanks to the Honorable Union Ministers present here today. Without their continued support, guidance and motivation, this ambitious project would not have seen the day of light. To conclude, I would like to thank all of you present here today for joining us for this special occasion. Thank you so much. Thank you, Shri Gulati ji. Ladies and gentlemen, we shall now present a short video highlighting the promising ethanol energy pathway and its potential for India. The video will also introduce you to flex fuel and electrified flex fuel technologies, offering a glimpse of the remarkable prototype of the world's first BS6 Stage 2 electrified flex fuel vehicle. The world is going through an energy transition due to concerns on the climate change and geopolitical issues. As India is the fastest growing major economy, these global challenges are even more severe for it. In 2022-23, India imported 87% of its crude oil requirements. Despite its lowest per capita CO2 emissions, India has the third highest emissions and is also impacted by adverse impacts of climate change. However, continued economic growth is must to improve quality of life for millions of Indians. Hence, India has to follow a sustainable growth model that balances economic growth and sustainability. The Honorable PM has set clear vision for us to become a global manufacturing powerhouse as well as to achieve Atmanirbharta in energy by 2047.
A future where India is powered by local renewable and clean energy, thereby reaching net zero emissions by 2070. A future where the fruits of economic development benefit all Indians and reach rural India. Transportation sector is the largest consumer of fossil fuels, and this offers huge potential for alternate fuels such as bioethanol. Ethanol could substitute for fossil fuel and is produced from renewable sources. Being plant-based, ethanol has the lowest carbon emissions on a well-to-wheel basis, which makes it environment-friendly. An indigenous clean energy source, higher ethanol will boost agrarian economy by spurring rural investments and jobs. Globally, ethanol is being used to substitute fossil fuels in many countries to benefit their economies and environment. India is also well endowed with surplus sugar, sugarcane and food grains production. Further, ethanol can also be generated from excess food grains that get wasted. Thus, it can also help drive economic value from this waste. Under the leadership of Honorable Prime Minister, India has achieved 11.5% ethanol blending in March 2023. 1,900 stations are dispensing E20 fuel in the country as of August 2023. This has saved precious forex, reduced GHG emissions and created wealth for farmers. Given the huge potential, India will realize 20% ethanol blending in 2025 to 26. In addition, under PM G1 Yojana, government is encouraging new 2G technologies which can drive ethanol from waste such as stubble. This will provide additional income to farmers and reduce problem of pollution from stubble burning every year. Since India has a huge availability of ethanol, we can rapidly realize a much larger fossil fuel substitution by introducing flex fuel vehicles or FFVs. Flex fuel vehicle technology can use any higher blends of ethanol beyond 20%. As India is also encouraging vehicle electrification, we can leverage advantages of both these approaches through the flex fuel self-charging strong hybrid electric technology or electrified flex fuel vehicles. These vehicles have both a flex fuel engine and an electric powertrain, thus providing dual benefit of greater ethanol use and higher fuel efficiency. These vehicles have both a flex fuel engine and an electric powertrain, thus providing dual benefit of greater ethanol use and higher fuel efficiency. Higher electrified flex fuel vehicles offtake can help retain existing ICE investments, create EV parts ecosystem, and give India global technology leadership. Electrified flex fuel vehicles provide higher fossil fuel savings and has the lowest carbon emissions on a well-to-wheel basis, as can be seen from Brazil experience. Since consumer acceptance is must for any new technology introduction, hence, suitable policy support is essential. With government support and industry commitment, these advanced greener technologies can rapidly displace traditional petrol and diesel vehicles. For Toyota, carbon is our biggest enemy. Our goal is to create a positive impact based on the principles of mobility for all and leave no one behind. Towards this, we will continue to provide cleaner technology options that are best suited to the unique energy mix, infrastructure readiness, and consumer acceptance of each country. We are fully committed to support government's efforts for energy self-reliance and decarbonization by making in India clean and advanced technologies not only for India but also for exports. As a significant step in this direction, we are introducing the proto of world's first BS6 Stage 2 electrified flex fuel vehicle.
This makes a landmark moment in TKM's journey to sustainable mobility and towards our global environment challenge for achieving zero carbon emissions by 2050. Way to go. Business can be sustainable only when environment is considered as the primary stakeholder. Now, we are pleased to present a brief video illustrating how our Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, has championed all alternate energy pathways, including electrification and alternative fuel technologies such as hydrogen and bioethanol. May we play the video, please? Honorable PM Shri Narendra Modi ji, who is leading the global mission against climate change, aims at achieving Atmanirbharta in energy sector by 2047. Nitin Gadkari ji, the Union Minister of Road Transport and Highways, looks forward to bring down oil imports to zero and save rupees 16 lakh crore for the country. Increasing prices of petroleum and import costs prompted Gadkari ji to take interest in biofuels in 2004. He even visited Brazil to explore possibilities. Ever since then, his forward-looking and focused approach to develop agrarian economy by making best use of locally available biofuels started transforming the traditional Annadata to modern Urjadata. The key objective is to use biofuels to protect ecology and environment. Today, close on the heels of successful Chandrayaan 3, Shri Nitin Gadkari ji will unveil Toyota Kirloskar Motors' world's first PS6 Stage 2nd electrified flex fuel vehicle FFV SHEV for India. This is built on the most popular and admired Innova Hycross and designed to be compatible with India's higher emission norms. Toyota is fully committed to its principle of respect for planet and is playing a significant role towards the vision of an energy-independent India through various pathways aimed at providing cleaner mobility for all. With E20 implementation, India is expected to save 30,000 crore rupees in oil import bill and reduction in GHG emission of 10 million MT. Ethanol offers opportunity for true energy self-reliance as India offers competitive manufacturing ecosystem supported by abundant raw materials and congenial infrastructure. The ongoing shift from first-generation food stock sourced ethanol to second generation of ethanol will encourage adoption of newer breeds of sugarcane with higher yields and less usage of precious water. India has huge ethanol potential, much beyond E20 mix. It can utilize excess ethanol to promote FFVs and flex fuel strong hybrid electric vehicles. These automotive technologies provide opportunity of greater substitution of petrol by ethanol as it is capable of using any of the higher blends of ethanol mix beyond 20%. An electrified flex fuel vehicle has both a flexi-fuel engine and an electric powertrain. It can provide 30 to 50% higher fuel efficiency as it can run 40 to 60% in EV mode with engine shut off. Brazil's well-to-wheel CO2 assessment stated that W2W CO2 emissions of electrified flex fuel vehicle is lowest even when compared with battery electric vehicles. Electrified flex fuel vehicle will hasten energy independence, local manufacturing and electrification. The National Green Tribunal and Energy Transition Advisory Committee have strongly recommended promotion of all green technologies including strong hybrid electric vehicles, SHEVs and electrified flex fuel vehicle etc. Unveiling of Toyota's world's first PS6 Stage 2nd electrified flex fuel vehicle for India by Gadkari ji is one more momentous milestone in India's automobile industry. True, electrified flex fuel vehicles provide an opportunity of greater substitution of petrol, and it's a good time to clap. Now please allow me to introduce, thank you. Now
Please allow me to introduce the distinguished presence of Shri Hardeep S. Puri ji, a former Indian diplomat who is currently serving as Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Honorable Union Minister of Housing and Urban Affairs in India. With utmost respect, I extend my invitation to Shri Hardeep S. Puri ji to address the gathering and share his sights. I would like to start by expressing my deep appreciation to the Honorable Shri Nitin Gadkari ji, Minister of Road Transport and Highways of India, for being both the inspiration of this program and for organizing what I think is the second such program. I recall having the privilege of attending a similar program where a Japanese Toyota model called, if I remember correctly, Mirai was unveiled. And I've had a fascination for cars since I was very young, and I continue to marvel at the advances in technology that are being shown in the transition from fossil fuel internal combustion engines to vehicles with a clean and sustainable fuels and technology. So on this occasion, I once again thank the Honorable Gadkari ji और यहाँ उपस्थित माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, my senior colleague and the Minister for Heavy Industries in the Cabinet, Masakazu Yoshimura-san, MD and CEO of Toyota Kirloskar Motors. Omedeto gozaimasu. Srimati Gitanjali Kirloskar ji, Chairperson and Managing Director, Kirloskar Systems Private Limited. Shri Vikram Gulati ji, Country Head and Executive Vice President of Toyota Kirloskar Motors. And my many friends and collaborators in this venture, Shrikant Vaidya ji and so many others I'm not going to name because that will take up the time I have been allotted. I also want to thank the ambassadors of Japan and Brazil who are present here today. Let me start on a personal note. Many years ago, when I was a career diplomat, I was posted to Japan. And one of the first meetings I had was with the then head of a Brazilian cooperative, if I may call it, called Unica. And the head of Unica then, I think the year must have been 2006 or thereabouts, told me that if India joins hands with Brazil and, of course, the United States, you may actually see the beginnings of something called a biofuels global alliance. I know these things, friends, take some time in developing, but I can tell you that we are now very close at looking at an international biofuels alliance. And I want to thank all partners. But the advances in technology would not get us by very far unless the technologies which are being developed are also commercially implemented. And that's where I think the automobile manufacturers, and here I want to compliment Toyota Motors and also Toyota Kirloskar for pioneering and implementing these technologies in India. On the last occasion when Gadkari ji hosted the first event, I told the then head of Toyota Motors, I said, you know, with a little bit of price differential, you would be able to sell more units of the Mirai car in India than you sell globally, because there is both the purchasing power for this quality and class of vehicles, as indeed there is a desire to move to cleaner technologies. Our journey up to 2014
our track record was, I think, somewhat mixed and perhaps our performance not up to the mark. I remember the then government, which was in office between 2004 and 14, tried to introduce a 5% ethanol or a biofuel blending in petrol in some of our states and union territories. Not all, some of them. But I think we ended the year 2014 with just about 1.5% biofuel blending that was achieved. After that, thanks to the visionary and decisive policies followed as a result of the decisions taken by the Honorable Prime Minister, we set a target of 10% blending to be achieved by November 2022 and 20% blending to be achieved by 2030. And I'm very happy to inform you that we achieved that 10% blending 5 months before time. That is, we did it 5 months before November 2022. And the 20% blending target, which was due in 2030, has now been brought forward to 2025. Today, when I was watching one of the video clips, it said there that E20 or the E20 blended fuel, that is containing 20% ethanol, which we are planning to introduce pan-India by 2025, which is not very far off, just 2 years off, that is available now in about 1900. So I told माननीय गडकरी जी कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा फिगर ठीक नहीं है और मेरे टॉकिंग पॉइंट में जो फिगर है 3,300 bunks में already it is available and it is going up by the day. And I think if you have 88,000, 89,000 bunks, our target should be that we complete the full amount well before. And for that, as Gadkari ji keeps reminding us, we must ensure that there is ethanol available in plenty. We've diversified the feed from which it comes. Earlier we were only doing it in sugarcane, which is maximum still, but we've also introduced maize, agricultural waste, broken food grain, and now we are also having a second generation from agricultural waste and from bamboo, and we're also looking at establishing the first third generation plant. It's already been pointed out that with E20 implementation by April 2025, the savings on the import bill may be around 35,000 crores annually, and oil import displacement will be 63 million barrels of gasoline in the year 2024-25. This will further contribute to reduce GHG emissions by 21 million metric tons and PM 2.5 emissions up to 14% than gasoline. We are confident that by such time we will not only have E20 but beyond. We have supported the introduction of facilities with 2G technology, therefore the use of parali to generate ethanol, which is otherwise burnt, causing pollution. The initiative by Toyota today is particularly important as it introduces the world's first BS6 Stage 2 electrified flex fuel vehicle prototype. This has the facility, both the flex fuel engine as well as the electric powertrain, thereby offering higher use of ethanol combined with better fuel efficiencies. With industry and government collaboration, we see India becoming a global hub for cleaner technologies and achieving self-reliance in energy soon. India has huge ethanol potential, much beyond the E20 mix. India can utilize this excess ethanol by promoting flex fuel vehicles and flex fuel strong hybrid electric vehicles, FFV, SHEV, electrified flex fuel vehicle. These vehicle technologies provide opportunities of greater substitution of petrol by ethanol, as it is capable of using any of the higher blends of ethanol mix beyond 20%. On this occasion today, I want to congratulate everyone. And I was often asked when I had just become Minister for Petroleum and Natural Gas in, I think, 2 years ago, मुझसे ये पूछा जाता था कि आप E20 आप 20% blending पे क्यों रुके हुए हैं? तो मैंने उस समय कहा था that it looks like some mindset problem, because we were told
that the normal automobile, as it is currently configured and engineered, can take 20%. But today, we are demonstrating that we are not stopping like that. The vehicles which are coming in will have the capacity to take much more than 20%. And I think you're witnessing that journey in transition. So I want to congratulate everyone. And I also want to say that in the times to come, you know, the technology of transportation, and I have the privilege of being part of that story as part of, for the last 6 years, in urban transport, Hamara metro system, the metro system in Delhi, which also had Japanese collaboration. We had a loan of 28,000 crores from JICA. And today I think we can say with great confidence that the Delhi metro system is one amongst the best in the world. And I think on any given day, it carries 6.5 million passengers per day, footfall. And again, it helps in reducing congestion on the roads. It helps in reducing pollution. So all these efforts that are being made today, I think contribute to that, including advancing the technology and the science to make urban transport much more efficient. And I must say with humility, we have a long journey to go ahead, but these are small but significant steps being taken. Thank you very much. Thank you, Shri Hardeep Singh Puri ji. Toyota echoes your thoughts. I now have the honor of inviting the Honorable Union Minister of Heavy Industries and Public Enterprise, Dr. Mahendra Nath Pandey ji. Under the leadership of Dr. Mahendra Nath Pandey ji, the Ministry of Heavy Industries has taken major initiatives for the growth of the automotive industry. I humbly request you, sir, to address the gathering. And I request you all to please bring your hands together as Dr. Mahendra Nath Pandey ji walks up to the podium. आज टोयोटा द्वारा विश्व के पहले BS6 फेज 2 विद्युतीकृत फ्लैक्स ईंधन वाहन का जो प्रोटोटाइप इसका इनॉग्रेशन है, इस मौके पर हम सबके बहुत ही सम्मानित आदरणीय भारत सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी और यहाँ पर पेट्रोलियम एवं शहरी आवास से जुड़े हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री हरदीप पुरी जी, अपने बीच ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ जापान तथा श्री मासाकाजु योशिमुरा MD एंड CEO टोयोटा किर्लोस्कर, श्रीमती गीतांजलि किर्लोस्कर, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किर्लोस्कर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, श्री विक्रम गुलाटी, कंट्री हेड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट टोयोटा किर्लोस्कर, और जापान के अन्य सभी डिप्लोमेट डेलीगेट्स, भारत सरकार के हमारे मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, अन्य सभी सम्मानित जन, सभी को हृदय से बहुत बहुत सम्मान। आज एक बहुत, जैसा माननीय पुरी जी ने जो मेराई और अन्य विषयों का उल्लेख किया, उस समय भी हम लोग माननीय गडकरी जी की पहल पर वहां उपस्थित थे, और आज भी जो पहल है ये किर्लोस्कर और जापानी सहयोग से ये जो नई चीज आज प्रोटोटाइप लॉन्च हो रही है, भारत के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज, इन सब के बीच हम सब सदैव माननीय गडकरी जी को आदर से याद करते हैं। जैसा हमारे माननीय पुरी साहब ने भी अपने संबोधन में उल्लेख किया, हमें तो स्मरण है कि जब देश में माननीय मोदी जी की अगुवाई में 2014 में हमारी सरकार आई, उसके पहले हम
माननीय गडकरी जी को मैंने कई मौकों पर सुना, जब पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इन सारे विषयों पर, एथेनॉल का मुद्दा हो या इस तरह किसानों की आय बढ़ाने के मुद्दे हो, इन सब पर लगातार देश को अपने विचारों से इन मुद्दों को फोकस करते रहे हैं और अपने मंत्रालय से, अपनी नई नई इनोवेटिव पहलों से उन्होंने इन बातों को बहुत आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इस मौके पर हम ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की 2014 में उनकी अगुवाई में सरकार और प्रधानमंत्री जी की जो पहले हैं, जिन चीजों पर पहले देश में दुनिया आगे सोच रही थी, जैसे मेरे डिपार्टमेंट से जुड़े फेम स्कीम है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सवाल पर भारत में 2014 के पहले, जबकि दुनिया के कई देश, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री के देश हो, चाइना हो, अनेक देश इस पर काफी आगे बढ़ गए थे, लेकिन भारत में इस पर डिस्कशन तक भी प्रॉपर वे में शुरू नहीं हुआ था। और उसमें हमारे नीति आयोग के भी सम्मानित लोग यहां बैठे हैं, मैं उनको आदर व्यक्त करता हूं। इन चीजों पर सबसे पहले देश में बहुत तेजी से फेम 1 की स्कीम हो, बाद में फेम 2 की स्कीम हो, इनके माध्यम से पहली बार भारत में मोदी जी की अगुवाई में चीजें शुरू हुई, विचार हुआ और उस पर अनेक तेजी से पहले हुई। एथेनॉल के मामले पर भी जैसा आप सबको विदित है, हम सब विस्तार से इस पर माननीय गडकरी जी को सुनेंगे कि कैसे समय से पूर्व उसके टारगेट को हम लोगों ने पाया और हम सब 2030 के टारगेट को भी 20% ब्लेंडिंग को 2025 तक ही उसको पाने के नजदीक पहुंच चुके हैं। ये हमारे देश की मोदी सरकार की जो तमाम इनोवेटिव आइडियाज पर नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम काम करती है और लगातार उन चीजों को पहल करते रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन सब का परिणाम है कि देश हर फील्ड में, अभी हाल में हम दुनिया के चौथे और दक्षिणी ध्रुव पर पहले देश के रूप में दुनिया में अपना सम्मान पा रहे हैं, चंद्रयान 3 के लैंडिंग के रूप में। इसी तरह से हर फील्ड में हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की पहलें हम सबको आगे ले जा रही हैं। उसमें मैं आपको शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा कि टोयोटा किर्लोस्कर जापानी सहयोग से आप सब लोगों ने, और किर्लोस्कर जी का जो विजन था, मुझे आज मैं अभिनंदन करूंगा गीतांजलि जी का कि हम सब के बीच आदरणीय विक्रम भाई आज दुर्भाग्य से नहीं है, लेकिन वो जिन चीजों को हम लोगों से चर्चा करते थे, बड़े खुले हृदय के व्यक्ति थे, उन चीजों को गीतांजलि बहुत जी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं अपना अभिनंदन, अपना सम्मान आपके प्रति प्रदान करता हूं। तो आज के इस मौके पर मैं आप सबको ये जो इनका जो दूसरा पक्ष है, आज इससे किसानों का जो लाभ है, आज भारत के अंदर आज 20% इथेनॉल का जो हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा सफल होता है तो आप समझ लीजिए कि हमारा 2020-21 में पेट्रोलियम आयात 185 मिलियन टन था, जिसकी लागत लगभग 551 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। अगर ये हम कदम आगे E20 का जिस तरह से एथेनॉल 20 बिल्डिंग को 25 तक हम पूरा करते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर हम भारत के अंदर अपनी आयात निर्भरता को कम कर सकते हैं और अपनी बचत कर सकते हैं। इसी तरह प्रदूषण की दृष्टि से भी हम इस विषय पर जो COP 26 में माननीय मोदी जी का वचन है, उस पर तेजी से हमारे कई मंत्रालय काम कर रहे हैं। हमारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र के लोग, हमारे माननीय गडकरी जी का मंत्रालय, हमारा मंत्रालय, और इन सब विषयों पर तेजी से काम करते हुए COP 26 के टारगेट को समय से पूर्व पाने की दिशा में आज हम सब उस काम का परिणाम आपको मैं बताना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज जैसे मैं फेम स्कीमों के बारे में कुछ आंकड़े जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दृष्टि से है, एथेनॉल के आंकड़े डिटेल हमारे अन्य आदरणीय बंधुओं के पास और ऑफिसर्स के पास होंगे कि इससे कितनी देश के अंदर आज अब तक जो हम लोगों ने लगभग फेम से, ये तो मैं अपने डिपार्टमेंट को जो सपोर्ट से फेम 1 2 फेम
द्वारा जो हमें सपोर्ट है उससे लगभग 9,44,567 गाड़ियां हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इस देश में लॉन्च की हैं, देश में चल रही हैं। अदर प्राइवेट भी इससे अलग बड़ी संख्या है। ये मैं गवर्नमेंट सपोर्ट की स्कीम की बात चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि आज 8,23,203 लीटर यह प्रतिदिन हमारी पेट्रोल की बचत हो रही है। इतनी बड़ी बचत देश में हो रही है। हमारी कितनी आयात निर्भरता कम हो रही है कि 2,50,45,341 लीटर पेट्रोल और डीजल के अब तक इस एक स्कीम की चर्चा मैंने किया, इससे हमारे देश को लाभ हुआ है। अगर हम कार्बन उत्सर्जन इससे कितना कम हुआ है तो उस पर निगाह डालें तो 11,92,266 किलोग्राम प्रतिदिन कार्बन उत्सर्जन की कमी हुई है। अब तक के आंकड़े हमारे जो नीति आयोग और हमारी कुछ और संस्थाओं के अपने ऑब्जर्वेशन से निकले हैं कि लगभग 3,62,72,623 किलोग्राम। ये मैं केवल ई मोबिलिटी के कार्बन उत्सर्जन की कमी बता रहा हूं। एथेनॉल के कार्बन उत्सर्जन और सबके आंकड़े आप जब जोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी सफलता इस दृष्टि से हम सबको मिल रही है। आज आप सबके बीच में ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि किस तरह से हम इस एथेनॉल मिलने के काम को आगे बढ़ा करके हम देश में जहां हम ये अपने किसानों को भी कितना बड़ा लाभ दे सकते हैं। एक आप सब यहाँ अनेक विशेषज्ञ बैठे हैं, स्वयं हमारे माननीय गडकरी साहब इस विषय के बहुत ही महारत उन्हें देश में हासिल है, देश दुनिया में इस दृष्टि से के लिए विशेष उनकी पहचान है कि हम लोग इस दृष्टि से आज देश में हमारी उत्पादन क्षमता 1,037 करोड़ लीटर प्रतिदिन की है और हम जितनी क्षमता हमारी है अभी हम उस क्षमता तक खर्च पूरा अभी नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब हमारी उत्पादन क्षमता है, अभी हमें जितनी जरूरत है उतना तो उपलब्ध है ही। 2022-23 में हमने लगभग 542 करोड़ जो है पेट्रोल इथेनॉल वाले ईंधन की हमें जरूरत पड़ी और 2023-24 में 698 करोड़ का एक आकलन है, आगे 988। हमारे पास अपेक्षा से अधिक एथेनॉल उपलब्ध है और इस एथेनॉल से एक छोटा सा आंकड़ा के किसानों को लगभग एथेनॉल के आपूर्तिकर्ताओं को अभी तक 81,796 करोड़, यानी मतलब लगभग 82,000 इतने करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। भारत के किसानों ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए भारत के किसानों को इसका लाभ मिला है। अभी छोटी सी इधर की कोशिशों से तो देश इसका लाभ उठा के कितना आगे जा सकता है और कितना हमारे किसानों को और हमारे पराली जलाने की समस्या का हल, जगह जगह चीनी मिलों के कभी कभी हम लोगों को ऐसे समस्या ऐसे मानी मोदी सरकार में और हमारी मोदी सरकार की पहलों पर गन्ना किसानों के लिए अन्य हमारे सहयोगी राज्य सरकारों ने इस गन्ना भुगतान की समस्या को बहुत हद तक उसका समाधान कर दिया है। फिर भी उन्हें एक नया विकल्प मिल रहा है अपने उत्पादों को, ये एथेनॉल की दृष्टि से। कुल मिलाकर के हम और हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इतनी नई पहलें कर रही है और उस दृष्टि से गडकरी साहब के मंत्रालय जैसे हमारे इस ग्रीन मोबिलिटी के, चाहे एथेनॉल का हो, ई मोबिलिटी का हो और चाहे हमारे हाइड्रोजन से जुड़े उन गाड़ियों को ग्रीन रजिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट दिया है उससे एक लाभ मिला। आवास मंत्रालय ने माननीय पुरी जी की अगुवाई में सबको अपने घरों में चार्जिंग की फैसिलिटी बिना किसी शुल्क के करने की सुविधा दी है। ऊर्जा मंत्रालय ने पावर का, अभी हमने इसमें हमारे ई मोबिलिटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा इसमें जो चार्जिंग पॉइंट का सेटअप था उसमें माननीय मोदी जी की पहल पर जो हाइड्रोजन मिशन बना और इस दृष्टि से चार्जिंग की दृष्टि से मिशन बना, उस मिशन का कंसेप्ट है कि 22,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग सेटअप बनाने की कोशिश हो रही है। और स्वयं हमारे फेम की स्कीम से मैंने माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी साहब के मंत्रालय को
अपने विभाग के 1000 करोड़ के लगभग 800 करोड़ रुपए दिया, जिसमें 7460 इतने पेट्रोल पंपों पर ये बनाने जा रहे हैं और दिसंबर जनवरी तक उसे पूरा करने वाले हैं, जहां चार्जिंग सेटअप का। तो इस सब के बीच में हमारी सरकार दुनिया जिस चीज में आगे बढ़ रही है, उसमें दुनिया से और आगे बढ़ने की कोशिश हम सबकी है। उस कोशिश में आपका ये सेमिनार, आपका आज का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और हम सब आप सबके माध्यम से आप सबके विजन आइडियाज के साथ मिल करके इन सब आइडियाज में हम लोग को एक टारगेट देखते हैं। वो टारगेट है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, वो टारगेट कि हमें इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने का जो सबसे प्रत्यक्ष दुनिया को दिखलाई देने वाला परिदृश्य है, जो स्वरूप है, उसका कदम आज आप उठा रहे हैं। इस पहले BS6 फेज 2 विद्युतीकृत हमारे एथेनॉल से चलने वाले प्रोटोटाइप के अनावरण का मैं आपका वेलकम भी करता हूं और आपके इस अभियान को शुभकामना भी देता हूं। और अपनी तरफ से हम सब सदा आप सबके इस अभियान के संग जुड़े रहेंगे, इसका भरोसा भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी। Thank you, sir. In summary, the Honorable Minister highlighted the need to drive India towards cleaner mobility by giving a major push to clean fuels. As you rightly said, sir, it's a landmark moment. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we are making progress in all the fields, clean fuels. As you rightly said, sir, it's a landmark moment. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we are making progress in all the fields, be it landing on Chandrayaan or be it moving towards a greener tomorrow. When we employ ethanol-based technologies such as electrified flex fuel vehicles, we would be able to reduce the oil imports and pollution, and definitely we'll have a solution for stubble burning, and it will be a great push and support to farmers. Wonderful thoughts, sir. Thank you very much. Now, with immense pleasure, I extend a warm invitation to our chief guest, to Shri Nitin Gadkari ji, the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways. Shri Nitin Gadkari ji, a visionary with an innovative approach, a dynamic and strong leader, and a staunch advocate of alternate fuel technologies such as hydrogen and bioethanol, has consistently championed progress. I kindly request the Honorable Minister to grace us with his insights. Please bring your hands together. मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, हमारे पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, टोयोटो किर्लोस्कर के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मासाकाजू योशिमुरा, टोयोटो किर्लोस्कर की चेयरपर्सन और MD आदरणीय मिसेस गीतांजलि किर्लोस्कर, कंट्री हेड मिस्टर विक्रम गुलाटी, सभी सम्माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से श्रीकांत वैद्य, इंडियन ऑयल के चेयरमैन, सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, आज का ये दिन बहुत खुशी का दिन है और केवल खुशी का दिन नहीं है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि टोयोटो किर्लोस्कर द्वारा आज वो प्रोटोटाइप वर्ल्ड की फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल इनोवा गाड़ी आज लॉन्च हो रही है। और मुझे याद है कि इसका लगातार फॉलोअप मैं मेरे मित्र विक्रम किर्लोस्कर जी के साथ लगातार करता था। आज के इस खुशी के मौके पे इस बात का जरूर दुख है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो लगातार इस मिशन में पीछे लगे थे, बहुत मेहनत और परिश्रम उन्होंने किया और निश्चित रूप से आज यह दिन हम सबको देखने के लिए मिला है। मैं विशेष रूप से विक्रम किर्लोस्कर जी की याद करते हुए उनको बहुत बहुत याद भी करता हूं और श्रद्धा सुमन भी उनके प्रति व्यक्त करता हूं।
आज के दिन का महत्व समझने के पहले हमें हिंदुस्तान की समस्या को समझना होगा। हमारे इकोनॉमी में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये कितनी बड़ी समस्या है ये तो आप समझ सकते हैं, पर मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इस बात के लिए मैं बहुत ही गिल्टी कॉन्शियस हूँ कि हमारे देश में जो 40% पोल्यूशन है, जो हमारा पोल्यूशन है वो फॉसिल फ्यूल के कारण, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण है। और स्वाभाविक रूप से हमारे देश में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और दिल्ली के लोगों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदूषण के कारण क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, इसका उनको अनुभव है। मैं 2-3 दिन दिल्ली में रहता हूँ, जल्दी भागने की कोशिश करता हूँ और जब गांव घर तक पहुँच जाता हूँ तो इन्फेक्शन पहुँच जाता है। और इसका कारण ये 40% वाटर एयर पोल्यूशन हमारी समस्या है। मुझे बहुत खुशी है, मैं विशेष रूप से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और देश की जनता के द्वारा उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे इंडियन ऑयल ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। पानीपत में जो हमारा प्लांट है, जो परली से, राइस स्ट्रॉ से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार करता है। और मैंने वैद्य साहब को एश्योर किया था कि तुम्हारा बिटुमिन जितना भी बनाओगे मैं खरीद लूंगा, क्योंकि हम टन इंडियन रिफाइनरी देती है और हमारा 30 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट होता है। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और आपका इंस्टीट्यूट देहरादून का, दोनों ने मिलकर एक छोटा मशीन तैयार किया है जो अभी प्रूव हो गया है, टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई है, जो परली से वो बायो बिटुमिन बनाती है। पर मुझे बहुत खुशी है कि पुरी जी आपके नेतृत्व में आपने अभी विस्तारा एयरलाइंस का एक फ्लाइट 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर यशस्वी रूप से चलाने का उपक्रम किया है। दूसरी बात आपने और अच्छी की है कि जब धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे तब हमने बहुत इनिशिएटिव लिया था और स्पाइस जेट का एक विमान देहरादून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल डाल के लाया था। जब ये विमान लाया था तो अजय सिंह जो स्पाइस जेट के मालिक है, वो मैं जब उनको आग्रह कर रहा था कि ये ट्रायल लेना है तो वो बड़ा संकोच कर रहे थे, बोल रहे थे मेरा मशीन बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। तब उनको विश्वास दिया कि एक्सीडेंट नहीं होगा, 100% सक्सेसफुल होगा। और आखिरी मैंने उनको डांटते हुए कहा कि तेरे बहुत काम करके दिए हैं, एक आधा हवाई जहाज हमारे कारण बिगड़ जाता तो चिंता मत कर, तेरे को ये करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि स्पाइस जेट का हवाई जहाज 50% एविएशन फ्यूल डाल के आया। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार में कुछ बहुत लोग अच्छा काम करते हैं। आपके फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के रिसर्च लेबोरेटरी ने अब वो ये जो बायो बिटुमिन 150 टन पर डे बनाना था, शायद वो सोच रहे हैं कि हम बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे। और आने वाले समय में वर्ल्ड में ये रेगुलेशन आ रहा है कि 2% वो एविएशन फ्यूल में 2% बायो एविएशन फ्यूल जाएगी। तो आपके नेतृत्व में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मैं पेट्रोलियम मंत्रालय को आदरणीय वैद्य, हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन, जिन्होंने बायो फ्यूल में बड़ा इंटरेस्ट लिया, हमारे राम कुमार जी और पूरे टीम को, पुरी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा। और एक दूसरी बात है जिसके लिए मैं पुरी जी को धन्यवाद दूंगा कि बीच में हमारे इथेनॉल का रेट, जो राइस से इथेनॉल बनता था वो 56 रुपए था और कॉर्न से बनता था वो भी 56 रुपीज था। अब उन्होंने कॉर्न का रेट शायद 54 की 54 किया है ना, शायद 54 किया है और राइस का भी 54 किया है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है देश के किसानों की ओर से, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसानों के लिए जीवदान देने वाली है। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहली बात, आज के दिन का महत्व अगर समझना होगा तो हिंदुस्तान की परिस्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। हमारे जीडीपी ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आता है।
और हमारे देश में एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। और हमारे देश में 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारी एमएसपी ज्यादा है और मार्केट प्राइस और कमर्शियल प्राइस कम है, और वो खरीदने के लिए भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए देने पड़े हैं। आज हमारे यहां ऐसी परिस्थिति है कि कॉटन के भाव आधे हो गए, सोयाबीन के भाव आधे हो गए। हम 1.5 लाख करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और विशेष रूप से शुगर इस साल अच्छे है, पर आज तक हमारी बीमारी थी शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, और एमएसपी से भी नीचे हमारे भाव चले गए थे। पर पुरी साहब, आपने और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया उसके कारण पहली बार आज कॉर्न को इंडियन मार्केट में 1800 रुपए के ऊपर भाव मिल रहा है। इसके कारण आपने इथेनॉल की परमिशन दी, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इथेनॉल की इकोनॉमी जिस दिन 2 लाख करोड़ की बनेगी, उस दिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 12% है वो 20% तक पहुंचेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 120 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, 500 ब्लॉक्स निकाले हैं जो सोशली इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशन, हेल्थ सब में पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे, तो गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और देश में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। और इथेनॉल ये रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है। आपने बहुत अच्छा काम किया कि इंडियन ऑयल ने आसाम में नुमालीगढ़ में एक रिफाइनरी डाली है जहां बांबू से बायो इथेनॉल बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, पर आपने इंडियन ऑयल ने हिम्मत से ये प्रयोग किया। अभी में जो मौका मिला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी को मिलने का, और ये नुमालीगढ़ से हमने पाइपलाइन डालकर बांग्लादेश में हम पेट्रोल और डीजल बेचते हैं। तो बात करते करते इथेनॉल की बात जब हुई तो मुझे श्रीलंके मिनिस्टर्स और हमारे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा, क्या आपको हमारे देश के लिए इथेनॉल एक्सपोर्ट करना संभव नहीं है? तो मेरा आपसे सुझाव है कि नुमालीगढ़ की रिफाइनरी से बांबू से तैयार हुआ इथेनॉल पेट्रोल में डालकर आप अगर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलेगी, बांग्लादेश का पोल्यूशन भी कम होगा और इथेनॉल के लिए इंटरनेशनल मार्केट भी मिलेगा। अभी फिलहाल आपने 20% की बात की है, वो 11.75% पे आया है। वैसे मैंने पहले दिन से कहा था कि इथेनॉल बनाने में रिस्ट्रिक्शन मत करो, पर वो सबने मिलकर काम करते करते बहुत दिक्कतें आती है। उसका परिणाम है कि जो आए उसको इथेनॉल बना दो। आज हमारे देश में राइस से इथेनॉल बनता है, कॉर्न से बनता है, फूड ग्रेन से बनता है। पहले समय मैं 2004 से मिशन के रूप में काम कर रहा हूं, तब हमारे एक फाइनेंस सेक्रेटरी थे केड़कर, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, विजय केड़कर। वो बोलते थे फूड वर्सेस फ्यूल, और मैं उनको बोलता था केड़कर साहब पूरा बैंड बच गया, हमारे यहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड के भाव बढ़ गए और हमारे भाव नहीं बढ़ रहे, आप सुनो, ये मत कहो। पर बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये व्यू पॉइंट मान्य हुआ कि हम फूड ग्रेन से भी इथेनॉल बनाने के लिए अनुमति देंगे। और आपने तो राइस स्ट्रॉ, परली से भी इथेनॉल बनाया, बांबू से भी इथेनॉल बनाया, अब वेस्ट लैंड का उपयोग करके इथेनॉल बनेगा, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने में कोई अड़चन नहीं है। और आपने ये भी 11.75 जो किया है, अगर आप थोड़ा सा इसमें एक बार फिर से बैठकर अगर ये 20% भी करना चाहते हैं तो 3 महीने के अंदर आप ये टारगेट पूरा कर सकेंगे। इतनी कैपेसिटी इथेनॉल मैन्युफैक्चरर के पास है और निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। इथेनॉल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि 100% इथेनॉल व्हीकल में यूज हो। और आज टोयोटा ने ये जो गाड़ी लाई है ये 100% तक जा सकती है फ्लेक्स इंजन में। इनके पहले मैं बजाज, टीवीएस और हीरो के पीछे लगा, मोटरसाइकिल तैयार की, ऑटो रिक्शा तैयार की। पूना में आपने इंडियन ऑयल ने 3 पंप शुरू किए, प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। पर प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल के पंप अब शुरू नहीं हुए। अभी आज के इस गाड़ी के बाद हमारे वैद्य साहब को और पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, सबको अब इथेनॉल के पंप शुरू करने के लिए आप जरूर आदेश दीजिए
और फिर से बाद ये गाड़ी वाले बोलते हैं कि पंप नहीं है तो गाड़ियां कैसे बेचेंगे। बजाज पूछता है मुझे कि मैं पूना में अगर टू व्हीलर बेचूंगा तो मुझे पंप बताओ कहां भरूंगा। तो पहले अंडा की पहले आमलेट, इसमें बहुत चर्चा हो रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब पंप शुरू करने की अगर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इथेनॉल के व्हीकल आना शुरू हो जाएगा, फ्लेक्स इंजन का, बाकी भी कंपनियां आएगी। और एक दिन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आएगा कि पेट्रोल का इंपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल से इस देश के वाहन चलेंगे। वो सस्ते भी है, कंज्यूमर का भी फायदा है और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, तो इंपोर्ट से भी मुक्ति मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहां विशेष रूप से सबसे बड़ी समस्या जो है वो विशेष रूप से डीजल के पोल्यूशन की है। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक आ गई। अब आपके ही नेतृत्व में 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अभी टाटा के साथ लगभग अंतिम इसमें आया हूं कि दिल्ली से जयपुर में केबल डालकर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं ताकि 3 बसें जोड़कर जाएगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट रहेगी और डीजल के तुलना में 30% रेट कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल और अच्छा करने से लोग गाड़ियों के बजाय उसमें जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है मैंने अच्छा किया कि बुरा किया। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के चेहरे में जितने ये जो हंसी आ रही है, इसका कारण हमने देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा किया है कि अब हर आदमी गाड़ी खरीद रहा है। और मैं जब इस मिनिस्ट्री में आया था तो हमारी इंडस्ट्री का साइज 4.5 लाख करोड़ था, अभी इंडस्ट्री का साइज 12.5 लाख करोड़ हुआ है। मैं जब मंत्री बना था, हम सब, हमारी सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम 7वें नंबर पे थे। अब हम 3रे नंबर पर आए हैं और पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, तीसरे नंबर पर इंडिया है और चौथे नंबर पर जापान चला गया। हमने जापान को पीछे डाला है। पर मैं मानता हूं कि अभी जल्दी हम लोग पहले नंबर पर आएंगे और वर्ल्ड का पहला मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इसके साथ अल्टरनेटिव फ्यूल को जो इंकरेजमेंट मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और पुरी जी, एक बात के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद ARAI ने आपको एक रिपोर्ट दिया है, डीजल में 15% इथेनॉल डाल सकते हैं। अगर इथेनॉल की डिमांड बढ़ गई तो दूसरा काम आपको, मुझे, महेंद्र पांडे और पीयूष गोयल को करना है कि वो पुरानी पॉलिसी को बदलकर आप ऐसी पॉलिसी लाओ कि जिसमें डालना है डालो। मैं आपको बताता हूं और एक नया काम हम कर रहे हैं, 4000 करोड़ लीटर जनरेटर सेट में जाता है। और ये मैंने आज महेंद्र पांडे जी को कहा कि किर्लोस्कर जो है पूना के, इनके, उन्होंने मेरे कहने पर जनरेटर सेट बनाया, पंप सेट बनाया। अब वो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो एक किट लगाकर जनरेटर सेट भी इथेनॉल पर चलता है और देश का पहला इथेनॉल का जनरेटर सेट मेरे बिल्डिंग में मैंने लगाया है और वो चल रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है, उससे 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, फ्लेक्स इंजन से बढ़ेगी, 20% पेट्रोल में डालकर बढ़ेगी। और इतना ही नहीं तो आगे डीजल में अगर आएगी तो हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी बदल जाएगी। हमारा किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा, विटामिन दाता बनेगा। और अब आपके, पुरी साहब, आपके सहयोग से हमारा किसान बायो एविएशन फ्यूल का दाता बनेगा। क्योंकि मैं किसान हूं, मैं बहुत थक गया हूं। मैंने बहुत कपास लगाई, चावल लगाया, संतरे लगाए, कर्जे का बोझा कम नहीं होता। हमारा दुख और दर्द अलग है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और अब सब लोग इथेनॉल के कारण, ये जो महेंद्र पांडे बैठे, आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी से मेरी बात हुई, अगर ये इथेनॉल है, चीनी कम आई इसलिए आज भाव मिल रहे, नहीं तो आपके आंखों में आंसू होते। चीनी के पैसे 2-2 साल तक चीनी मिलें दे नहीं पा रही थी। ये तो पुरी साहब ने और मोदी जी ने इथेनॉल लाया, इसलिए उत्तर प्रदेश में आप हंस रहे हो और पूरे किसानों के पैसे मिल रहे हैं, नहीं तो आपका घूमना कठिन होता। 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है। एक दिन मोदी जी मुझे कह रहे थे आप ये करो ये करो, बोल रहे कहां जाना है?
मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां गन्ना लगाते हैं और उनके पैसे नहीं मिले तो निर्णय करने के लिए हम यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले यही है कि किसान और ज्यादा गन्ना लगा रहा है। मेरे यहाँ भी 60 एकड़ गन्ना है, क्योंकि गेहूं चावल कपास में कमाई नहीं होती। गन्ने में अभी 85 टन हमारे कोल्हापुर बेलगांव, अभी मैं कर्नाटक में चुनाव में गया था, ये इनके फैक्ट्री में गया था, ये बैठे, मैं पूरा ऊपर से देख रहा था हेलीकॉप्टर से, पूरे बेलगांव जिले में गन्ना ही गन्ना है। तो आज का ये निर्णय किसानों के लिए वरदान है। इसलिए आई एम स्पेशली गिविंग माई थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ टोयोटो, पर्टिकुलरली इंडियन, हमारी भारत की जो कंपनी है उसकी चेयरपर्सन गीतांजलि किर्लोस्कर को मैं विशेष रूप से आई एम गिविंग माई स्पेशल थैंक्स टू यू फॉर योर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन regarding reducing the pollution in the country and creating job opportunities and growth in agriculture sector. It is to be one of the important and historical thing for all of us. So we are giving special thanks to you. Today it is a very, very historical day. Once again giving my thanks to all management of Toyota and the people of our country, and particularly from the farmers community. I am giving my special thanks to all stakeholders, those who are related with this mission, and I am requesting you, as early as possible, make more models on flex engine. And I am waiting for that. First of all, I will give the order immediately. And that is the dream of all of us, to have the motorcycle, two-wheeler on 100% ethanol, auto rickshaw on 100% ethanol, car on 100% ethanol. And once upon a time in my own parliamentary constituency in Nagpur, we have started the buses from Scania with 100% on bioethanol. So everything is possible, and that is to be the need of our country regarding pollution and considering the economic challenge of the country. Once again, I am giving my thanks to all of you, giving thanks to Petroleum Minister, giving thanks to Mr. Vaidya from Indian Oil, and also giving thanks to research from Indian Oil Laboratory. And I am really happy. Today is one of the important day in my life. From 2004, I am convincing to the people about ethanol. Today, this dream is fulfilled because of you. That is to be a great thing for me. I am giving my special thanks individual from Mr. Nitin Gadkari, because I am working on this mission from 2004. I was with Vajpayee ji, sent me to Brazil. With Ram Naik, I started all this thinking in the country, and that is to be a great achievement. I am really thankful to you personally. It's really a great day in my life. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, sir. You have given us a food for thought, and as you rightly said, that this is the historic moment when we are unveiling this remarkable prototype. As you said, encouraging our Annadatas to become Urja Datas, India will become a global leader in the manufacturing of these electric vehicles. Big thank you, sir. And we are also positive about a green and sustainable future. May I now please welcome Chairperson and Managing Director, Kirloskar Systems, Srimati Geetanjali Kirloskar, who will now present a vote of thanks to our esteemed guests on this Kirloskar, who will now present a vote of thanks to our esteemed guests on this momentous occasion. Please put your hands together. Namaskar. As we reach the conclusive moment of this very momentous and historical occasion, I would like to express my gratitude and deep appreciation. I will keep this very, very short for paucity of time. कहना तो बहुत था, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए आपकी इजाजत चाहूंगी. Shri Nitin Gadkari ji, we are very grateful to you to have taken time off your busy schedule to be personally present here. मुझे याद है, मला आठवत है गडकरी साहब, इतने कॉन्वर्सेशंस गडकरी जी ने लेट मिस्टर विक्रम किर्लोस्कर के साथ किए थे. कई सालों से ये डायलॉग चल रहा है. With your motivation and guidance today, sir, Toyota Kirloskar Motor has successfully unveiled the world's first prototype BS6 Stage 2 electrified flexi-fuel vehicle. Please give a big round of applause for this momentous and historical introduction. A remarkable advancement in sustainable automotive technology, aligning, sirs, with your emphasis on green transportation solutions.
Dr. Mahendra Nath Pandey ji, we greatly appreciate your time and presence here and the ministry's comprehensive support to the Indian auto industry through various policies and schemes such as FAME and PLI that have been instrumental in promoting industry growth and accelerating the shift towards cleaner and greener mobility. Your kind presence here is a great honor to us all. मुझे याद है डॉक्टर पांडे, आप बैंगलोर आए थे, आपने एक फैक्ट्री विजिट की थी और विक्रम जी और मैं आपको मिलने आए थे उसके बाद, और आपने अपनी पूजा समाप्त करके आप बाहर आके आप बहुत खुश थे. You said you had a most wonderful visit to an extraordinary factory of Toyota Kirloskar Motor which demonstrated manufacturing excellence at the highest standard. और आपने उस दिन भी आशीर्वाद दिए थे और आज भी मुझे आपने आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबका आगे भी आशीर्वाद रहे. Shri Hardeep Singh Puri ji, a very close friend of my late husband Mr. Vikram Kirloskar, we are very grateful ji for your astute leadership towards ushering a new dawn in India's energy landscape, as Shri Gadkari ji has also spoken very, very highly of today. Your direction has helped charter a path for the creation of a vibrant biofuel ecosystem in the country that can now encourage the automobile industry to introduce technologies that can help rapidly shift from fossil fuel. Your presence here, therefore, Ji, is of immense motivation and great importance to us all. Thank you so much. We are very fortunate that our respected senior cabinet ministers not only drive this mission from the government, but are individually deeply committed to it. We would like to express our grateful, heartfelt gratitude to the senior officials of the Government of India, dignitaries from the diplomatic corps, leaders from industry, academia, experts from key associations, industry bodies, media, and all the distinguished guests present with us on this very momentous, very historic occasion. Last but not the least, a big congratulations to the entire team of Toyota Kirloskar Motor for achieving this feat, for believing in the country's vision, and for believing in our dreams for a cleaner environment. The culture of the company promotes and encourages environment-friendly thinking across levels in the company, and this is a manifestation of their hard work and their effort. Last, I would like to say that we are very fortunate that we have an enabling government here that drives this mission for a cleaner environment and net zero with great compassion and great commitment. They're deeply committed to this cause, and that really encourages industry to come forward, rise to the occasion, and introduce such technologically innovative products at this very momentous occasion. And I would like to thank the government for their support, and thank you, sirs. Jai Hind. Thank you, Shrimati Kirloskar ji. I request all dignitaries on the dais to kindly step forward for a photograph. Hello. Yeah. I request all the guests to remain seated as we are making our way to the other stage for the unveiling of the prototype of the world's first BS6 Stage 2 electrified flex fuel and a brief technology explanation. And I request our colleagues from media to please use that platform that has specially been created for this purpose, for your ease and comfort, to capture this momentous occasion. I also request other guests to kindly remain seated as the unveiling will be displayed on the LED screens and the big screen on the stage. So kindly stay seated as we walk towards the dais where the unveiling will happen. Please make way as our honorable ministers and dignitaries approach the dais.
नमस्कार। अभी तक हमने एथेनॉल के बारे में काफी बात की। एथेनॉल कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत ही वास्तविक और दीर्घकालीन उपाय है। सबसे जो बड़ा चैलेंज एथेनॉल के अंदर आता है वो ये है कि एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होने के कारण से उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है, जो कि कस्टमर के एक्सेप्टेंस के लिए चैलेंज हो सकता है। आज जो हम व्हीकल डिस्प्ले किया है वो फ्लेक्सी फ्यूल इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल है। इसका मतलब ये है कि यह व्हीकल फ्लेक्स फ्यूल और इलेक्ट्रिफाइड दोनों एनर्जी तीनों कोर कंपोनेंट और फ्लेक्स फ्यूल इंजन है। यह व्हीकल 60% इलेक्ट्रिफाइड एनर्जी से और 40% बायोएथेनॉल से चलता है, जिसके कारण से जो फ्यूल इकोनॉमी फ्लेक्स फ्यूल के कारण से कम होती है उसको रिकवर किया जा सकता है। और यही कारण है कि फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का एमिशन, वेल टू व्हील एमिशन सबसे कम है। और इसके कारण से यह टेक्नोलॉजी जो है बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों को के परिवर्तन के लिए सहायक है। दूसरा चैलेंज जो बायोफ्यूल का है वो यह है कि एथेनॉल वाटर जल्दी एब्सॉर्ब करता है और एसिडिक नेचर है, जिसके कारण कोरोजन इसमें ज्यादा होता है। तो उसके लिए जो हम ये इंजन है उसको ये मेक इन इंडिया, हम इंडिया में ही ये इंजन बना रहे हैं और उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो हमने किए हैं, जैसे कि कोरोजन से बचाने के लिए स्पार्क प्लग, बॉल सीट, पिस्टन रिंग, इन सबको हमने वाटर रेजिस्टेंस बनाया है। और इसके अलावा दूसरा जिसके कारण से हम इसे वर्ल्ड फर्स्ट कह रहे हैं, इंडिया की दो यूनिक कंडीशन है। एक तो यह है कि यह व्हीकल कोल्ड स्टार्ट इंडिया में -15 डिग्री सेंटीग्रेड में होने में सहायक है, इसलिए इसमें कोल्ड स्टार्ट सिस्टम हमने लगाया है। और दूसरा, इंडिया का जो रेगुलेशन है वो ब्राजील से ज्यादा स्ट्रिंजेंट है और इसमें हाइड्रोकार्बन्स भी हमारे यहाँ स्ट्रिंजेंट है और ये रियल ड्राइविंग एमिशन है, इसलिए हमने इसमें 3-वे कैटलिस्ट एंड यूसीयू प्रोग्रामिंग भी की है। इसके अलावा भी हमने इस व्हीकल में फ्यूल टैंक, फ्यूल पाइप का मटेरियल चेंज किया है, एथेनॉल सेंसर ऐड किया है, फ्यूल फिल्टर और फ्यूल पंप लगाया है। अभी हमने इसका प्रोटोटाइप बनाया है और आगे हम इसका कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन करके इंडिया में लाएंगे। धन्यवाद। तो ये यादगार क्षण है इतिहास की तरफ। तो अगर हम देखें और आज देखें तो हमें एक दिखाई देता है। So it's a great opportunity when we are going to unveil the prototype of world's first BS6 Stage 2 electrified flex fuel vehicle. Sorry, I have to use it. Now I will request Awesome.